Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 23rd December and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels along with the buying and selling zones for Nifty and Bank Nifty for the next trading day, which will be on 24th December. Now, 24th December is a special day, friends. So not because the next day could be a Christmas day, but because it is आर ऑप्शंस एक्सपायरी जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस है उनकी एक्सपायरी का डे है right. So you'll need to be careful in listening to this video, noting down the resistance and support levels and understanding the tonality of the market. Now अगर आज का निफ्टी का डेली चार्ट देखें, but before that friends, let me tell you that it takes a lot of efforts to make these YouTube videos, and we have created many videos for our trading community and our investing community. So my invitation to each one of you is to subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon so that whenever we upload any new video you get a notification. And also be generous to share these videos with your friends and trading communities friends so that they can also get quality knowledge and analysis, right? So let's go to the daily chart of Nifty and Bank Nifty friends, and you can see that today the market was more or less flattish when it opened. In fact, Bank Nifty thoda bearish bias tha, but Nifty was more or less flat. And 15-20 minutes market was in a range bound, but then it took the cues from international market and started building up slowly a bullish pressure, and throughout the day एक बुलिश प्रेशर बना रहा. इनफैक्ट आज निफ्टी ने मोर देन 62% फिबोनाची ये हाई से ये लो जो लार्ज कैंडल बनी थी हमारी 21 दिसंबर को, उस कैंडल का 62% क्लेम कर लिया. सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट. एंड ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी इज अ लिटिल स्लगिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्लोली इट्स रिकवरिंग द लॉस्ट ग्राउंड. नाउ अगर हम आज के कंट्रीब्यूटर को देखें फ्रेंड्स, तो विप्रो, सिप्ला, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, हिंद यूनिलीवर वर द मेन कंट्रीब्यूटर्स, while as the top losers जो थे, एक्चुअली टॉप लूजर बहुत बड़े परसेंटेज से नहीं थे, but there were 5 companies: हीरो मोटोको, Divi's Lab, Titan, NTPC and Power Grid. So small percentage of the drop in their prices was observed. The market breadth overall remained positive with the 42 stocks advancing and only 8 declining from the stack of Nifty 50. Nifty closed today at 13,601. And so good part is 13,500 का जो एक psychological level था वो claim हो गया, and 600 is also a good level to be claimed back. Nifty gained today 135 points after gaining 138 points yesterday. Bank Nifty gained 257 points, and it closed at 29,883. We had estimated for today the Nifty's range at 13,300 to 13,600. For Bank Nifty, we had estimated 29,000 to 30,000. And our bias was a neutral and consolidation ka bias tha. And our bias was basically that for next few days, market will consolidate in this large red candle. So you could see that, last 2 days, the market had consolidated in that range only. So this kind of analysis we do based upon, the data of the same day or previous days and technical analysis. So you can also learn the same. ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से बात करें, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी बोथ हैव मेड हायर हाई एंड हायर लो, एंड इट्स इन कैंडल कंसोलिडेशन. अगर हम पैटर्न के हिसाब से बात करें तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी बोथ मेड अ बुलिश कैंडल आफ्टर मेकिंग एक हैमर बनाया था निफ्टी ने कल और एक ड्रैगन फ्लाई बनाया था बैंक निफ्टी ने. ऑन अ वीकली इफ वी सी फ्रेंड्स, वीकली में निफ्टी हैज मेड hanging man kind of pattern, and bank nifty has made neither bullish nor bearish kind of candlestick pattern. Now price action को देख लेते हैं. अगर निफ्टी कल डाउन साइड में मूव करती है फ्रेंड्स तो 13,560 हमारा पहला लेवल ऑफ सपोर्ट है, सेकेंड है 13,515, थर्ड लेवल है 13,475 एंड नेक्स्ट लेवल है 13,434 on the downside. So these are the support levels which will be acting tomorrow. So अगर हम downside note करना चाहें friends, so you can jot down as 13,434 on downside. And upper side में अगर बैंक निफ्टी बैंक
अगर अपर साइड में निफ्टी मूव करती है बुलिश बायस के साथ में कल, then it will be 13,619 today's high as the first level of resistance. Second will be 13,663. Third level is support 13,714 and fourth है 13,744. So you can consider 13,742 the upper side limit for tomorrow. अगर बैंक निफ्टी में देखें friends, तो of course we'll be looking at the intraday trading opportunities at the end of the session friends. But as of now, let's see the range. बैंक निफ्टी में देखें friends, तो lower side में support system है 19,740 के आसपास में, second है फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है 29,740 पे, सेकेंड है 29,580 पे, थर्ड है 29,456 पे, थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट, फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स आपको 29,324 पे। एंड अगर बैंक निफ्टी में कल बुलिशनेस आती है, देन यू वुड सी द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इमर्जिंग एज 29,938 which is tad above than today's closing. आज का हाई है इनफैक्ट ये। एंड अगर आप देखेंगे सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आएगा 30,040 पे, थर्ड आएगा 30,200 से 30,225 के बीच में, एंड फोर्थ लेवल आएगा हमको 30,500 में, राइट। तो दीज आर रेजिस्टेंस लेवल्स। सो ये एक रेंज आप नोट करके रख लें। ऑफ कोर्स विल बी लुकिंग एट इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आफ्टरवर्ड, बट उससे पहले हम डेटा देख लेते हैं। 24 दिसंबर की एक्सपायरी देख रहे हैं हम निफ्टी में फ्रेंड, जो कि कल है, और इसकी क्योंकि निफ्टी क्लोज हुई 13,601 में, तो 13,600 हमारा एट द मनी का स्ट्राइक है। तो इसके आसपास में हम देख लेते हैं कि किस टाइप की पोजीशंस बुल्स एंड बियर्स ने यहाँ क्रिएट की हुई है, राइट। 13,600 and let me note that down, right? So this is the strike. Now at this strike you can see almost a 978 आपके fresh contracts आए हैं, overall 1.5 million contracts. So this will work as a support 1, right? And ये support 1 रहेगा तो आपका there is some challenge friends here. If I'm writing, something is working and something is not working, right? So I'll just use a highlighter here so that you can make a note of it. So हमारा this will act as a first level of support, right? इसके नीचे unwinding दिख रही friend, तो इसका मतलब है कि कुछ खास unwinding बहुत कम हुई है। Second level of support friends हमारा है 13,550, third level of support है 13,500 पे, और यहाँ पे हमारी जो है मैक्सिमम OI है हमारी, राइट। सो मैक्स OI is at 13,500. So we can say 13,500 is our lower level of support for tomorrow. Of course अगर ये टूटा तो then 13,400 is another support where we can see 2.7 million contracts, but शायद इतना नीचे तक ना जाए। now अगर हम call side में देखते हैं, let's see what has happened on call side, and you can see that bears have closed a lot many positions here. अपनी call unwind की है उन्होंने almost 13,600 के level तक, right? And you can see that. तो that means आज bears की थोड़ा हिम्मत टूटी है। However, don't ignore 13,500, 13,550, 13,600, क्योंकि 13,600 पे अभी भी 2.2 million contracts हैं, which is more than the number of contracts or open interest on the put side. However, the first level of resistance will come at this level 13,600, 13,700 पे हमारा second level of resistance आएगा, जो कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है नजदीक में, राइट। सो वी कैन से 13,700 कुड बी ऑन द अपर साइड द लिमिट। हाउएवर इवन इसके ऊपर भी कॉल राइटिंग हुई है, एंड दिस कुड बी 13,750 कुड बी आर फर्दर रेजिस्टेंस इफ 30,700 इज ब्रोकन। सो हम रफली यहाँ पे 13,500 से 13,750 की रेंज देख सकते हैं, राइट, फॉर निफ्टी। नाउ इसका इस ऑप्शन चेन का पीसीआर फ्रेंड्स इज 1.02,
1.02 is a neutral PCR. So neutral PCR का मतलब क्या हुआ कि neither bulls are in control nor bears are in control, right? So overall tie है यहाँ पे. So you can see that tomorrow's expiry may be volatile, but it will be a win-win situation. Maybe a little upside, maybe a little downside, and at the end of the day, they will consolidate at one level. Before we look at the intraday opportunities, let's also go and see what has happened in the international markets. For that, we start from European market, which is right now under lockdown or part lockdown or complete lockdown. So ये जो 20th मतलब 21 दिसंबर की कैंडल है, उसके बाद में रिकवरी आपको डेक्स जर्मनी में भी देखने को मिल रही है एंड यूके में भी, बट यूके ने अभी भी रिकवरी बहुत अच्छी खासी नहीं की है यहाँ पे, ऑल्दो स्ट्रक्चर इज बुलिश इन बोथ द मार्केट्स, राइट। नैस्डैक को देखते हैं फ्रेंड्स, नैस्डैक ने कल रिकवरी अच्छी दिखाई थी, आज रिकवरी आज भी थोड़ा वोलेटाइल है नैस्डैक एंड रिकवर कर रहा है, right? But you can say that it is still consolidating within the candle of 21st December, right? And so is true for S&P 500 as well as Dow Jones Future, right? So दोनों अगर आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, but both have got the support, although Dow Jones tried to break this trend line. However, this trend line has been respected at the end of the day so far. As long as when I'm making this video at around 7 o'clock, market seems to be having a buying pressure. Now, looking at Nifty, and okay, before that, before we look at the intraday trading opportunities, let's talk about the data. For the data, provisional data of FIIs is a little bit bullish with a 536 crore worth equities bought out by them in cash market, though it was double yesterday, 1153 tha kal, right? And आज DIIs ने again sell out किया, they booked the profit 1327 crore का sell out था. But overall अगर हम दिसंबर में बात करें फ्रेंड्स, तो FIIs have so far pumped in the almost to 40,100 crore के आसपास में, while as DIIs have withdrawn around 31,153 के आसपास में. So that's the provisional data. Of course, we should not forget in November FIIs were net buyers with a 65,000 crore, while as DIIs were net sellers with 48,000 crore. So approximate figure दे रहा हूँ आपको. That means the FIIs smart money is coming in. As long as that's in the market, market will go slowly up, right? And अगर हम अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहें फ्रेंड्स, तो वी कैन सी सम अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडिंग, बट एट द सेम टाइम लेट्स से निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी आज काफी स्लोली अप गई है, और दो इट वाज अ बुलिश बट द मूव वाज स्लो. नाउ विद इन 13,560 to 13,620 अवॉइड ट्रेडिंग and look for the ORC breakout in this region, right? And अगर market gap up start होती friends, as it has been happening in the past, तो आपको एक यहाँ पे profit booking होते हुए नजर आएगी, क्योंकि DIs will be net active immediately if the market is opening at these levels, right? तो ये लेवल पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, ये डाउन जाने वाले ये है अगर मार्केट यहाँ चालू होती है तो. और मार्केट अगर डाउन साइड में यहाँ कहीं स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, यू वुड सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हियर, सो दैट आल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इन सच अ सिनेरियो वेयर देयर इज अ कंसोलिडेशन हैपनिंग, आप सिंपल यहाँ पे एक ओपन रेंज कैंडल का ब्रेकआउट की तैयारी करें. जैसे ही ये ओपन रेंज कैंडल ब्रेकआउट होती है, लेट इट सस्टेन above these levels. So if it sustains above 13,620 for let's say half an hour, and then it shows a bullish bias like a rising volume, RSI above than 60, और जो भी आपकी VWAP की strategy है, price above the VWAP, then you can definitely go long. Or if it is broken downside, you can short it, provided all the global markets are also in red. That's the way you can trade. That means and agar those of you who are into swing trades, you can think of trading Nifty downside only below 13,434. 13,434 के नीचे जाती है, definitely आपको एक short
एक 13,200 के आसपास तक के लिए एक स्विंग मिल सकता है. And those of you who want to go long for swing in Nifty, as of now, let it come out of the consolidation before you initiate your position in swing trades. Right now, back Nifty को देखते हैं friends. तो back Nifty में your zone, no trading zone is from 29,700 से 29,938 का. Now there are a lot of resistance available in back Nifty if it tries to go up. 30,000 के ऊपर अगर let's say अगर ORC टूटती है आपकी किसी भी डायरेक्शन में, ब्रेकआउट मिलता है आपको, इसके ऊपर आप लॉन्ग जाएं. अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है इन लेवल पे, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप शॉर्ट जाएं. मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है, दीज आर द एरियाज टू गो लॉन्ग फॉर. अगर मार्केट म्यूटेड, जैसे आज एक म्यूटेड मार्केट की ओपनिंग थी, हमने इंतजार किया हमारी ओपनिंग रेंज कैंडल का. जैसे ही ये ओपनिंग रेंज कैंडल यहाँ पे सस्टेन की एट दिस लेवल, दिस वाज अ बाय सिग्नल क्लियरली, राइट. तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे था कंसोलिडेशन, लाइक ये ओपनिंग रेंज कैंडल थी, ये डाउन साइड में ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, एंड इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, राइट. सो देन देयर वाज अ possibility of you making this much money, right? So that's the way you can trade back Nifty or Nifty, either side. Prefer to have hedged position during the consolidation, friends. Market sometimes goes slow, so don't buy puts or calls unless until there is a clear sharp up movement or down movement. So buy calls and puts only when there is a high volatility. Otherwise आपकी प्रीमियम की प्रीमियम कम होते जाएगी, right? Theta will kill it. So selling option is better option, but at the same time you need to hedge it with equivalent or whatever hedging strategy you are using, right? By buying puts or calls in accordance with your strategy. So friends, मार्केट की जो कल के लिए हमारी ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही है, बेस्ड अपॉन द डेटा इज कमिंग फ्रॉम 13,450 to 13,750 for Nifty and 29,400 से 30,500 for Bank Nifty. RSI 64 में है निफ्टी का comfortably अभी. You can see that it is in a bullish mode. Bank Nifty is still below 60. So stochastics of Nifty has come out of the overbought zone in daily, but weekly में अभी भी ओवरबॉट जोन नहीं है. सो थोड़ा कंसोलिडेशन आपको और देखने को मिलेगा. दैट मींस जब तक ये बड़ी कैंडल, ये रेड बड़ी कैंडल के ऊपर नहीं आती है मार्केट, यू शुड बी लुकिंग एट ब्रेकआउट होने के बाद में ही यू विल गेट swing trade key opportunities here, right? With this, I hope, friends, you are able to get clarity in market direction, or how you can trade or how you can not trade. Sometimes you should avoid trading when it is not clear. The fear of muted corona in Europe is still there, and Christmas ka time hai, so many FIIs will go on leave, and you can also see that from the quantum of their buying. Quantum suddenly 1/4, 1/5 हो गया है. So उसका भी एक ध्यान रखें. If you are trading intraday, look at option chain data or India VIX and USD INR charts. They will help you to understand the mood of the market. Stop loss and trailing stop loss मत भूलें, and keep on booking profit, friends. Nobody has become poorer by booking the profit. So keep on booking the profits. I trust you are becoming confident traders, and you're getting the pulse of the market. Thank you very much for watching the video. To get latest information, do subscribe to our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon, and be generous to share the videos with your friends and trading communities. Signing off until the next video, friends. Good luck, happy trading, happy investing.